the government, they have had a full discussion in the parliament, Hmm. told everything, and no, like it takes a lot of brain, I guess, to understand law. Now, it can Hmm. be like you do not interpret the law as you read it. Right. It has it has other meanings to it. Every word is has meaning to it. It is not superfluous. So I think you should have left that to lawyers and other people. Even people who were on roads did not know what they were fighting for. इसमें एक और चीज एंगल है. सो लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट कंट्रोवर्शियल थिंग इन दिस CANRC. अगेन इट्स आवर ओन पर्सपेक्टिव, प्लीज डोंट गो ऑफ अस बिकॉज मेरे पीछे मत पड़ना भाई, क्योंकि देख लो. सो इट्स जस्ट आवर पर्सपेक्टिव, सो यू कैन डिसएग्री विद दैट, इट्स कंप्लीटली फाइन. सो अगर तुम्हें एग्री नहीं करना, प्लीज गो टू अनदर चैनल, गो वॉच अदर चैनल, बट डोंट गेट ऑफेंडेड. इट्स एज सिंपल एज दैट. सो CANRC का जब एंगल आता है इसमें, सो पॉइंट इसमें ये है कि उनका पर्पस यही था कि जो इलीगल इमिग्रेशन, क्योंकि ऑलरेडी हमारे रिसोर्सेज एक तो ऐसे ही लिमिटेड है, ऊपर से अगर और हम सारे को सिटीजन देंगे, उसमें भी उन्होंने बॉर्डर रखा है 2014 तक हम लेंगे, उसके बाद के हम नहीं लेंगे. सो वो चीज है. प्लस उसमें अदर अदर रिलीजन्स को इसलिए दिया गया क्योंकि वहां का इन्वायरमेंट उनके लिए सूटेबल नहीं था, पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान का. अफगानिस्तान से तो खैर कौन ही आता है, लेकिन क्या पता. तो दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड. सो इंक्लूडिंग ऑल ऑफ दीज थ्री नेशंस, इट वाज अ जस्टिफाइबल स्टेटमेंट कि हाँ ठीक है, मतलब जो रिलीजन्स माइनॉरिटी में, या जो रिलीजन्स वहां पे खुद की सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको रख लो, ठीक है, समझ में आता है. वो भी 2014 में. बट मुस्लिम्स को ना रखना, क्योंकि उनका वो मेजोरिटी नेशन है, वो वहां पे रह सकते हैं, उनको मतलब फिजिकली या ऐसे किसी असॉल्ट की दिक्कत नहीं होगी, ऐसा ऐसा कोई उन पे थ्रेट नहीं है जितना माइनॉरिटीज पे है. सो पहला ये रीजन मुझे लगता है. दूसरा, जो CANRC इम्प्लीमेंटेशन है, तो ऑब्वियसली इंडिया में उसको इतना इन्फ्लेट किया गया कि उसको इतना क्या बोलते हैं, जो कम्युनिटी, जो स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटीज में, इतना उसको ऐसे बढ़ा जाएगा कि हमें निकाल दिया जाएगा. सो उस वजह से पूरे कंट्री में रेज हुई, और इसका कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि जिस बंदे ने, या जिस बंदे ने वो आर्टिकल पढ़ा है, वो उस चीज को समझेगा कि यार इसमें ऐसा थोड़ी ना कि जो करंट सिटीजन है उसको निकाल देंगे, ऐसा तो उसमें कहीं लिखा हुआ नहीं हुआ है. लेकिन वही चीज है ना कि अगर कोई कम्युनिटी इस अपने जो मतलब लोकल गुरुज हैं उनको ज्यादा मानती है इंस्टेड ऑफ द लॉ, I guess that is a very what you can say bad practice. क्योंकि जहां ऐसा होने लगता है कि हम अपने लोगों को लॉ से ऊपर रखने लगते हैं, वहां फिर चीजें कंफ्यूज हो जाती हैं. हम एक्स बोलेंगे, तुम वाई समझोगे, और वही चीजें कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाती हैं. पूरा जितना भी ये मैटर हुआ, इवन दिल्ली, इवन बैंगलोर, यहाँ जितने भी स्टेट्स में, जितनी भी जगह पे ये राइट्स हुए या थोड़ा सा अपराइज हुआ, आई डोंट थिंक देर देर वॉज अ पॉइंट. और अभी तक वो उसका ड्राफ्ट क्या नाम है, प्रोसेस में है, अभी उसका कंप्लीट नहीं हुआ. सो व्हाट डू यू थिंक वाज द मेजर फ्लॉ इन द होल पॉलिसी, दैट यू थिंक, और मेजर, बिकॉज वी नो दैट फॉर व्हाट रीजन इट वाज बिल्ड, उन्होंने उसे क्यों बनाया, और व्हाई इट इज नेसेसरी, क्योंकि हमें ऑब्वियस सी बात है कि हमें जो एक्स्ट्रा लोग हैं उन्हें निकालना है, वो अलग बात है, बट उसके लिए भी अभी म्यांमार में वहां पे कैंप्स इनिशिएट किए गए हैं. So, what was the one thing that you point out in this whole policy that was proposed initially कि उसमें ये दिक्कत थी, इस वजह से इतना कुछ प्रॉब्लम हो गई? See, हम्म, but there was a हम्म. मैं problem in the interpretation by lame हम्म. virtue signalers. ओके. Seriously, हम्म. like if you see during the protest, there was an academic booklet created by AMU faculty and students to हम्म. go through what everything is. हम्म. So it clearly mentions that for see if you are a Hindu, like हम्म. a Muslim, हम्म. then when NRC is done, with the help of CAA, you will be included. हम्म. सीए की मदद से आप किसी को भी इंक्लूड नहीं कर सकते एक्सेप्ट फॉर द माइनॉरिटीज ऑफ बांग्लादेश, Pakistan and Afghanistan. You will have हम्म. to prove that you were citizen of those countries and you were minorities of those countries and you do not possess any document or living proof of being here. First of all, हम्म. then only हम्म. you can be included. But they हम्म. thought CA was even utilized for the non-Muslims of हम्म. India, and that was an idiotic interpretation of the whole law. Then the interpretation हम्म. of Article 14.
They were like, everyone is equal, everyone is equal. How can you create a citizenship for only these? They forget that everyone is not equal in India. Hmm. You do not compare two unequals with the equals. वो वाला Right. कॉन्सेप्ट नहीं है. बिकॉज अगर Hmm. वो होता, देन रिजर्वेशन नहीं होता, अलग अलग लॉज नहीं होते, Right. सबके लिए अलग अलग लॉज नहीं होते. कुछ Hmm. लोग Hmm. प्रेफरेंस और रिजर्वेशंस जो दिए जाते हैं, प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, कोटास दिए जाते हैं, स्कीम्स दी जाती हैं, वो सब नहीं होता. जिन्हें Hmm. जरूरत होती है उन्हें थोड़ा सा अलग हटके गवर्नमेंट स्टेट सपोर्ट करती है एंड इंक्लूड करती है, सो दैट दे आर इन मेन स्ट्रीम. Right. That Hmm. plain concept of equality, that everyone is equal, there is no diversity in India, was absolute, like, failure from their part. It's a loser's argument. And Hmm. this has been reiterated by Harish Salve also and J. Sai Deepak also. They are also Hmm. Supreme Court lawyers. Do you think they are Hmm. mad? And when it was reiterated by Subramanian Swamy, he was Hmm. attacked on every social media page. But he said the truth. Muslims and Hindus are not treated equally. Right. Why do you think they are treated equally? These Hmm. two things were there, that you included CA with NRC, first of all, which was not meant to be. Then Article Hmm. 40 interpretation. These two things, I think, was there was not a fault on the part of the government. They have had a full discussion in the parliament. They Hmm. told everything. And no, like, it takes a lot of brain, I guess, to understand law. Now, it can Hmm. be like you do not interpret the law as you read it. Right. It has it has other meanings to it. Every word is has meaning to it. It is not superfluous. So I think you should have left that to lawyers and other people. Even people who were on roads did not know what they were fighting for. Right. Many of them did not. Hmm. I know. So I think that was There. Mhm. there was no fault in the policy, but there was a fault on our part, that we did not interpret it correctly. Hmm. Right. और Anubhav, इस I would like to point one thing. Mhm, I would mhm, like to point one thing. CA is not about giving citizenship to some particular individual or groups, or mhm, denying citizenship to some particular individual or group. CA is mhm, all about accelerating a process of Citizenship Act of 1955. Citizenship Act of 1955 says that you can mhm. get Indian citizenship by 5 ways: either by birth, either by descent, either by registration, either by naturalization, and either by, you can say that, incorporation of territory, as Okay. happened in the case of Pondicherry. Mm, So CA is mainly considered with the people who want to of the process of naturalization. mm. So CA says that we will reduce the time from 11 plus 1 years to 5 plus 1 years. That's all Okay. CA says. It doesn't Mm, say that we will not give Muslims, citizenship. It's not mm, saying that. It's saying mm. that you can still come by naturalization process. You can still come by registration. Oh, sorry, registration is not applicable on them because they are a part of undivided India. So Mm, naturalization process can still apply on them. It's not that, mm. but it's just that they have to take it takes more time for them. That's Right. all the CA is saying. It is not Mm, going to affect any citizen of India, and neither it's going to affect the Muslims who want an Indian citizenship. It's just that कि नेचुरलाइजेशन प्रोसेस में 11+1 ईयर का वो कॉन्सेप्ट होता है, उसको 5+1 ईयर का कॉन्सेप्ट कर दिया, और कुछ नहीं. और ऐसा right. नहीं कि सीए पहली बार आया, 2003 में भी आया था. ठीक है, Mm, सीए को mm, 57 में भी अमेंड किया गया था, 86 में भी अमेंड किया गया था. कई 7-8 बार सिटीजनशिप एक्ट को चेंज किया जा चुका है. तो ये ऐसा कुछ नहीं कि किसी सरकार ने पहली बार इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश की है. और रही mm, बात जहां तक एनआरसी की और एनपीआर की, तो भाई वो एक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड बनाने के लिए, जैसे अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी नंबर्स होते हैं, और उसके mm, बहुत mm. सारे फायदे होते हैं कि एक बार तुमने नंबर डाला, तुम्हारे हेल्थ की बेनिफिट्स, तुम्हारे कार के इंश्योरेंस, तुम्हारे सब कुछ एक ही बार में आ गया. तो सपोज Right. करो तुम कहीं ऐसी ग्रेव सिचुएशन में फंस जा रहे हो, सपोज करो तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, मान लो. ठीक है, अब अमेरिका में अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया और किसी को किसी ने उसको देखा, उसको हॉस्पिटल पहुंचाया, अगर डॉक्टर ऐसे उसको सोशल सिक्योरिटी नंबर मालूम है डॉक्टर को, वो लॉग इन करता है, उसको पता चल जाता है इसको कौन कौन सी बीमारियां हैं, और वो Mm, उतनी जल्दी इलाज शुरू कर देता है उस चीज का. तो right. अगर एक Mm, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड तुम्हारे लिए भी बन जाए, तो भैया उसमें mm, क्या दिक्कत है? हेल्थ सारी चीजें तुम्हारी एक्सिलरेट हो जाएंगी प्रोसेस को. mm, ठीक है, mm. तो एनआरसी
एनपीआर देखो, एनआरसी एनपीआर में तुम कह सकते हो कि एक रिश्ता है, ठीक है, बट एनआरसी एनपीआर और सीए में कोई रिश्ता नहीं है, ये दो बहुत अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। राइट। ये दोनों एनआरसी एनपीआर में है रिलेशनशिप, तुम कह सकते हो कुछ एक्सटेंट पे, ठीक है। लेकिन अगर तुम ये कह रहे हो कि सीए और एनआरसी में कोई रिलेशनशिप है, और अगर तुम मोरालिटी पे किसी चीज को जज करना चाह रहे हो, तो भाई वेल एंड गुड है, तुम जज कर सकते हो, तुम हर एक्शन मोरालिटी पे जज कर सकते हो, वो तुम्हारी प्रेरोगेटिव है, मैं उसमें कुछ नहीं बोलने वाला। लेकिन जो मेरे समझ में आता है, जितना लॉ मैंने पढ़ा है थोड़ा बहुत, यू नो, उसके हिसाब से सीए एनआरसी और एनपीआर में तीनों का डायरेक्ट संबंध कहीं नहीं है। ओके। वो सिर्फ एक स्पेशल केस में तुम कह भी सकते हो, अगर तुम कहना चाह रहे हो कि मान लो एनआरसी से जो 10-12 लाख हिंदूज जो बाहर में भी 19 लाख में से, ठीक है, उनको शायद सिटीजनशिप मिल जाए, लेकिन जो अभी तक के आंकड़े हैं वो केवल 31,000 लोगों के हैं, तो उनको भी पूरा नहीं मिला, ठीक है। तो अगर तुम उस बेसिस पे जज कर रहे हो भैया, तो फिर वेल एंड गुड है, हम कहे पहली बार, तुम जज कर सकते हो, जितना मन करे उतना जज कर सकते हो, उसमें कोई कुछ नहीं कहने वाला। वो तुमको जैसा सोचना है भैया सोचो। तुमको भाई मानना है कि सब एलियंस का करा धरा, तुम वो भी मान सकते हो, तुमको 50 थ्योरियां चलती है, तुमको जो मानना मानो भैया, कोई राइट। कुछ कह थोड़ी ना रहा है तुमको। लेकिन जो हकीकत है भैया, जो हम लोगों के नजरिए से है, वो यही है कि ये वो सवाल नहीं है कि किसको किसको दिया जा रहा है किसको नहीं, ये बस एक्सीलरेशन का सवाल है कि इनको जल्दी मिलना, उनको बाद में मिलेगा, बस यही इतना ही डिफरेंस है।